गुड इवनिंग, नमस्कार और कासा डायलॉग्स में और ऑन गाना शॉट आप सबको दोबारा स्वागत है। वेलकम टुडे इवनिंग। टुडे इज अ स्पेशल शो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हो रहा है। इससे पहले मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूं, मैं अपना आई वांट टू एक्सप्रेस आवर कंडोलेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ everyone in CASA and all of us who are watching this show to those two bright young officers who lost their life in an aircraft accident in Arunachal, and my heart goes out to their families, right? They're true sons of India. Okay, बहुत लोगों ने पूछा कि भाई ये कासा डायलॉग्स क्या होता है, तो आई जस्ट थॉट हम सब आप सबको बता दूं। कासा इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी committed to sharing, analyzing, and discussing issues of national, regional, and international importance. It consists of eminent defense and civilian personalities. ये एक हमारा थिंक टैंक है जिसमें मैं भी शारिक हूँ, और उनके बिहाफ में मैं और जो भी आपके सामने आ रहे हैं गेस्ट, वो सब कासा के ही हैं तकरीबन, राइट। आज हम कासा डायलॉग्स में इंडिया पाकिस्तान डायलमा और हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है, राइट, ये जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर, ये काफी क्योस का माहौल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में काफी कलबली मचा हुआ है और पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो रोजमर्रा का डिस्कशन है। पर हमारा दृष्टिकोण आज ये है कि हमारे ऊपर क्या होगा, हमारा क्या इसके ऊपर व्हाट इज आवर कंसर्न एंड व्हाट हाउ डू वी डील विद पाकिस्तान। इसके लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर अरुण सहगल हैं, राइट। मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो, राइट। Thank you. I really honored to be on your show. थैंक्स अ लॉट सर। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं ये शो के बारे में बात करूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आप ब्रिगेडियर अरुण सहगल के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे से बहुत सीनियर हैं और बहुत तजुर्बेदार सीनियर ऑफिसर हैं। जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, आप ब्रिगेड कमांडर थे, और इनके अंडर हमने एक प्री स्टाफ कैप्सूल कंडक्ट किया था, राइट, जहां मैं भी, उन्होंने उस वक्त मेरा सीख किया था कि किस तरीके से सीनियर ऑफिसर्स यानी जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करने का इनके डायरेक्शन में। और हमें और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि उस कैप्सूल में जो हमने ट्रेन किया, उनमें से आज के दिन 2 आर्मी कमांडर हैं। आई वंडर इफ यू नो दिस सर। So I don't know. There are 2 army commanders out of that three staff which you conducted. Anyway, that is not the issue. ब्रिगेडियर अरुण सहगल जो हैं वो माने जाते हैं कि पाकिस्तान के जानकार हैं। पाकिस्तान के जानकार किस लिए हैं? ये अपना इंडिया के ट्रैक टू डायलॉग्स में ये शरीक हुए हैं काफी अरसे से, दिल्ली पॉलिसी ग्रुप में और आदि बहुत थिंक टैंक्स में, ऑफिशियल थिंक टैंक्स में ये इनका बोलबाला है। और खास करके हमारा नेशनल डिफेंस कॉलेज में जाके सिनेरियो गेम्स और वॉर गेम्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कंडक्ट करते हैं। जब हमने एनडीसी किया, ये आप आए और हमें सिखाया कि इंटरनेशनल सिचुएशंस में कैसे अनफोल्ड होते हैं वगैरह वगैरह। इट्स इंडीड माय फॉर्च्यून दैट मेरे गुरु मेरे सामने हैं और हम उनके साथ बात कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता होना चाहिए आप किस स्तर के हो। और दूसरी बात, खास करके पाकिस्तान के बारे में आज जो हालत है पाकिस्तान में, उसके बारे में बात करने के लिए मैंने इनको खास बुलाया, क्योंकि ये ट्रैक टू डायलॉग में ही शारिक नहीं हुए। ये जितने इनके लीडर हैं पाकिस्तान के, राइट, जो आजकल के एक्टर हैं वहाँ पॉलिटिकल, मिलिट्री वगैरह वगैरह में, ये उनको पर्सनली जानते हैं, राइट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक रेयर मौका मिल रहा है with someone who has actually dealt with Pakistan and over a period of time, और जो अंदरूनी जानकारी है पाकिस्तान के बारे में। Sir, please welcome, and I would request you to give your opening idea and then I'll take it forward. Thank you,
General Shankar, for this rather overwhelming introduction. Uh, I'm not an expert on Pakistan, but I study Pakistan like most Indians do to understand what the dynamics at play are. And the reality of the situation is that Pakistan is at crossroads. Uh, as we speak, we do not know in what shape the Pakistan will emerge in a couple of weeks or months. The basic question that we have to ask as Indians is, why is Pakistan going down the tube? And why is it that any nation which is facing such serious economic, political, and ethnic and religious extremism within their own country cannot come together and solve these issues? I think that's the main issue that we have to look at. What is it that it is driving the political parties not to come together? What is it that Imran Khan is becoming the face of this whole thing, and the Shahbaz Sharif and the other people who are of the current establishment are keen to keep him under check, despite the fact that the country is going through such horrendous economic problems. There is no industrial production. Today the news comes in that the international airlines are going to stop flying into Pakistan because they can't pay for the fuel here. So there is this whole and on top of that we see this idiotic. I'm sorry to use that word. No, that's The okay, foreign sir. minister of Pakistan, who goes to an OIC conference and it And starts talks lamenting against, yeah, about Kashmir. yeah, I mean, and this is not the time. yeah, This is right, not sir. the time for Pakistan to do all kinds of these shenanigans. But they are not going. They believe that repeating the same old stupid story will get them into some kind of Position, out of trouble. yeah. But as we go along, I'll explain why the political leadership is trying to play this little game, and what is there at the back of their mind. So I'll over to you, General Thank you, Shankar, sir. with these some opening या remarks. थैंक यू सर दैट्स जो आपने बोला बहुत सही बोला. एक और मैं आपको इसी बात में ऐड कर लूंगा. वो पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने 45,000 एकड़ जमीन भी दे दिया एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग. वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्यों दे रहे हैं. राइट. खैर, जैसे हम पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ हर एक इंडियन जो है ना पाकिस्तान के ऊपर एक्सपर्ट है. हम सबके अपना अपना राय है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या हम किस तरीके से सलूक करना है. राइट. और जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, क्या मन में आता है कि कर्ज में डूबा हुआ है, फेलिंग स्टेट, रेडिकलाइज्ड, टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर का फाउंटेन हेड है. ये एक फ्रंटलाइन स्टेट माना जाता है, पर हालांकि आजकल बैटल ग्राउंड स्टेट है, वो अलग बात है. पानी का किल्लत है उधर, खाने का किल्लत है, पॉलिटिकल टर्मोइल है जो जो सहगल साहब ने अभी बताया हमें. एक न्यूक्लियर पावर भी है और इसका भी चिंता है सबको. और ये इनके इतिहास में ये मिलिट्री और डिक्टेटरशिप तो आए और कितने गाजी आए और कितने गाजी गए. राइट. अगर आप पाकिस्तान के पत्रकार को अगर आप उनके बारे में उनका लेख पढ़ेंगे तो ये यही इस्तेमाल करते हैं आज के. ये मतलब आप पिछले 10 दिन में इनके जो ऑपेड्स में ये शब्द आता है, अनार्की, कैओस, डिजास्टर अहेड. वो आप एक ने तो बोल दिया कि भाई पाकिस्तान इज अ सीरियल बेगर. ओके. उसके बाद ब्लीक सिनेरियो, रडरलेस. आजकल एक और खास चीज जो उनके पत्रकार लिखते हैं कि वो अपने आप को देखते हैं, कंपेयर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के साथ. वो कहते हैं कि भाई इंडिया कहाँ पहुंच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ रह गए. राइट. तो रह गए तो यहीं रह गए जो उनके खुद के चित्रकार दर्शाते हैं. ठीक है. जहां गरीबों का खून चूस के अमीर मोटे हो रहे हैं और इकोनॉमी और इनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे जा रहा है कि कहीं गाड़ी हिल नहीं रहा, डिफॉल्ट में जा रहा है. और खैर पता नहीं कब ये गिर जाए खड्डे में. राइट. और लोकतंत्र का तो वहां जनाजा निकलने के लिए तैयार हो गया. राइट. इस वातावरण में हम आज के दिन मैं यही दरखास्त करूंगा और इनका खुद का ये है कि ये 5-6 आइटम जो जो पाकिस्तान का हालत क्या है, एक रिव्यू लेंगे हम. उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस
के बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में चाइना और यूएसए और यूके का क्या रोल अदा कर रहे हैं, इसके अलग अलग पहलू हैं, उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा और मैं आग्रह करूंगा सहगल साहब को वो खुद बताएं पाकिस्तान का क्या रवैया है इंडिया की ओर और हमारा क्या ऑप्शंस है। जैसे मैंने बताया, हाँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कहीं भी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, आखिर ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, एक न्यूक्लियर मुल्क है और ये जहां जो भी उस देश में होता है हमारे ऊपर असर पड़ता है। सर इतना ही मैं बताऊंगा अभी, आप ओवर टू यू एंड यू प्लीज टेक इट ऑन। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा सवाल है कि ये पॉलिटिकल इनफाइटिंग क्यों बंद नहीं हो रही है, क्यों इस इमरान खान को चुप कराने में लगे हैं, क्यों इलेक्शंस की डेट अनाउंस भी हो गई है परंतु आर्मी कहती है कि वी कैन नॉट हेल्प इलेक्शन कमीशन इन कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, और जो नेशनल इलेक्शंस हैं जो कोई 5-6 महीने दूर है, अक्टूबर में है मेरा ख्याल, वो उसकी डेट की भी अभी उसके ऊपर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। सो द क्वेश्चन ये है कि ये उनका फोकस क्या है। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी इन फाइटिंग में लगी हुई है, और ये इन फाइटिंग जो है वो है अपना अपना जो है कुर्सी बचाने के लिए और अपना जो है उल्लू सीधा करने में वो लगी हुई है। दे आर ऑल इन्वॉल्व इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट overcoming the national interest. The second point which is important to note is that there are large number of calculations being done whether Imran Khan can become the prime minister. Okay, if you arrest Imran Khan, there is a Imran Khan less this thing, bring the foreign minister or somebody to rule. So the basic issue is that the political establishment is not serious at this juncture to resolve country's problems, but it is more serious and more concerned about resolution of their own interests, political interests. In यानी कि this वो अपना problem, they want to come to rule the country rather than the take care of the country. absolutely, they want to rule for making money, feathering their own nest, and politically executing their opponents. Is the political execution of their opponents is all the game plan. The problem now here is this: after Bajwa has left, the army is on the back foot. The army is on the back foot purely because the fact is that army does not know how does it intervene. उसके अंदर एक बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इन सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इमरान खान ने has created what is called a nationalist agenda. He is becoming an icon of Pakistan's nationalism, Pakistan's core interests, and to safeguard Pakistan from all foreign intervention and to provide Pakistan a sense of identity. In this scenario, the large number of junior cadres and ex-servicemen community have joined Imran Khan. हाँ, और ये भी कहने के लिए सही होगा सर जो आप बोल रहे हो, वो जो आज तक ये जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी और गार्डियनशिप ऑफ पाकिस्तान वाज इन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और इमरान खान उसको छीन रहा है ये, एंड जो डिवीजन हो गया है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके साथ भी पाकिस्तान आर्मी इज हेजिटेट टू इंटरवीन इन द होल स्टोरी लाइक यू जस्ट सेड. So am I right in saying this? Absolutely correct. The problem right now for the senior, okay, there is yet another problem. When you look at the civil-military relationship in Pakistan, you have to also understand that the senior military officers of the thing are living in, like you rightly said, they have got huge amount of land, huge amount of cocoons. When I visited Lahore, I went to the officer house of the retired chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, and another corps commander. You should see their houses.
It's huge. They live off free diesel. They get उनको बिजली नहीं होती है 4-4, 8, 5-5 घंटे. उनको फ्री डीजल मिलता है. उनके घर में लॉन है. उनके घर में सेपरेट एरिया इनक्लोज है. उधर कोई नहीं आ सकता. And they live a life of luxury while the rest of the country is suffering. Now they have created a cocooned existence from themselves. This is away from the reality. And then what they do is they try and dictate to the political class how the country ought to be run. And these politicians in Pakistan side with the army to safeguard their own interests, Okay. build up their own empires, and with the result is the poor person in Pakistan has to buy 4 onions rather than a kg of onions under the present circumstances for something like close to 50, 60 rupees. And today, their position is such that you are buying petrol over for 260 rupees a liter. And yet, when we talk to our Pakistani friends in the track to dialogue, etc., they say, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सब कुछ मिल जाता है. उनको पूछो भैया, आपको तो मिल जाता है, बाकी जो आपके भाई बंधु है, बाकी जो देशवासी हैं, उनको नहीं मिलता. कहता वो भी मैनेज कर लेते हैं. नहीं मैं So सर this whole concept of management. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. इसके जो आपने जो बोला है वो यही है जो ये चित्र में दिखाया जा रहा है. और मैंने एक आर्टिकल लिखा था केक ईटर्स ऑफ पाकिस्तान. उसमें मैंने ये लिखा था कि वहाँ टिम हॉटन्स करके कैनेडियन चेन है जिन्होंने वो पाकिस्तान में इन्होंने अपना आउटलेट खोला था. जब आउटलेट खोला था वहां कतार लग गया और वहां 700 रुपए के एक कप कॉफी पी रहे थे और उसमें बहुत लोग लगे. तो किसी ने पूछा उसको, भाई आप कैसे कर रहे हो, बाकी उनके पास तो पैसा ही नहीं है 2 वक्त रोटी खाने का. तो उन्होंने बोला वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर. इसका मतलब यह है कि द इलीट ऑफ पाकिस्तान जो आप जैसे बोल रहे हो उनमें और जो बाकी आम पाकिस्तानी में एक दरार पड़ा हुआ है. और वो उनके खुद का लेख में ये बड़ा क्लियर आता है कि 2 वक्त का रोटी टेबल के ऊपर लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है. यहाँ तक के हालात ये है कि एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोग अपने वतन छोड़ के through own smuggling route they are financing themselves through smuggling and going off to Turkey and West Asia and all that. और ये मैंने something like migration, outward migration which is happening. And this is for the first time I'm hearing of this. Your views on this, and then you could please go ahead. No, I absolutely correct. You see, Dubai and the West Asian destinations are the what they call this the places where they go and settle down. They create their own little nests over there. All of them. Whether you know what happened after Afghanistan fell and Karzai and all have gone out to Dubai. All these guys are going to Dubai, and now you are aware of the fact how the dollars from Pakistan are being siphoned out of the country. And they're going to Afghanistan. So, Afghanistan. No, Afghanistan is the route. Afghanistan is the route. I believe almost $1 million a day go through that route. So the basic issue is that it signifies 2 things. One, it signifies that the national elites have come to a conclusion that there is no future for them in the country, and they are all trying to flee. The number 2 issue is that the people are coming onto the streets, and that's why you see a large collection when Imran Khan goes or anywhere he goes, because like I said, he's providing a nationalist alternative to people who believe that अगर हमारा कोई इस समय कोई मसीहा है जो हमारे देश के बारे वतन के बारे में सोच रहा है, वो है इमरान खान. तो और उसी जो एस्टेब्लिशमेंट की व्यू है कि अगर इमरान खान आ गया तो वो हमारे को सवारी सबकी जो वो बंद कर देगा, जो है हमारी बिजनेसेस बंद कर देगा, हमारे को वो जो है तकलीफ होगी. Added to that issue is how does the army react? How does the army react? I was telling you that there is a dissension between the senior cadres and the middle piece cadres.
not dissension in the dissension sense, but they are unhappy. They are unhappy because they feel that the country is going down the tube, and the political establishment is becoming a Nero, fiddling on the roof, and the military senior leadership are allowing this to happen. So if This I is the problem. this is the problem. So आपने जो बोला है इसका मतलब यह है कि इनका ये मसला इनका इतना संगीन है, चाहे इमरान खान ऊपर आए ना आए, आर्मी आए ना आए, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर इमरान खान मान लो अगर कल के दिन इलेक्शंस हो गए और वो तकरीबन प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो वो पाकिस्तान को ले डूबेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो हालत आज के दिन हुआ है वो इमरान खान की वजह से ही हुआ है पिछले 3 साल से, और उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसके शासन में ये हालत हुआ है। अगर इमरान खान नहीं आएगा तो ये जो है इनको पता नहीं कि ये इनका इकोनॉमी और इनका देश को कैसे बढ़ाना है, और इनमें इतना दरार पड़ गया है, और दरार ज्यादा पड़ सकता है कि हालत और भी बिगड़ सकता है। ये दोनों तरफ देखोगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल ओनली गो डाउन। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आई मीन 2 पॉइंट्स मोर आई वांट टू पुट अक्रॉस कि आजकल जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैज गॉन, नो वन इज गोइंग टू हेल्प इट। कोई कर्जदार आके इनको पैसा नहीं देने वाला है, ये फ्रंटलाइन स्टेट तो रहा नहीं। दूसरा, इनका पानी और एग्रीकल्चर और वगैरह का इतना किल्लत है कि उसमें से ये भी उभर के नहीं आएंगे। अगर आप तीनों चीज अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान will remain where it is, or in fact, I won't say remain where it is, it will only go down further. Your views, sir? No, absolutely correct. Okay, there is no two ways about it. You have summed it up beautifully. But let me just highlight a couple of economic issues. The first fundamental point we have to understand is this, that economically, even the West Asian clients of Pakistan, Saudi Arabia, etc., are now not giving them straightforward loans. They are giving them loans for, they are putting money in the banks, and they are asking for how are you spending this money and what is the kind of programs you are trying to implement. A. B. You are aware of the fact that the IMF is putting the money in what they call the number one account. The number one account basically is this thing, is that it will be program oriented funding. So no free funds. No free funds. It will be program-oriented funding, for which the Pakistani state will have to be answerable to IMF. Third, they will have to extensively cut down on the defense expenditure. Extensively cut down on this expenditure. And the fourth issue is that what we are seeing now is that the Chinese are getting a little fed up with Pakistan. They are getting fed up with Pakistan is because only 2 days back they raised a loan of they asked for return on investment of $1.9 billion. That is dues to them for the production of electricity, their share of the electricity production. IPPs, those IPPs, the independent power producers. So what is the status is that Pakistan is a state which has got a lot of electricity. It's not that they're not short of electricity. No, they're surplus. They have a reasonable distribution system. But the cost of electricity is 30 rupees a unit. No one pays for it. A country cannot afford to pay 30 rupees a unit. So what they do is they amortize the cost of electricity for the normal people. Once you reduce the cost from 30 rupees to a 6 rupees or a 10 rupees for a normal person, who bears the expenditure of 20 rupees? Because the Chinese are the new Jews. I call them the new Jews. They are not going to let you get away with your money. Okay. So when we come to the China section, I'll tell you what the China is going to do, but that's a separate issue. But the point we have to understand is this, is that there are elements who are trying to bail out Pakistan. And that elements are United States and UK. Okay. United States and UK, particularly UK and through United States effort, the European Union, are giving increased quotas to Pakistan for textile production, etc., etc. Those quotas are now being given to Pakistan to basically to ensure they get some kind of funding back into the country. But there is a limit to it.
You cannot go beyond Beyond a limit. a certain level. So the question basically is this, and the next point now, what is happening is Pakistan is actually selling ammunition and equipment to to Ukraine. to Ukraine Yeah, through USA. for reimbursement of funding. Right. So this is all being orchestrated through Germany and England. There's a defense strategic group which the United Kingdom has created, and it is all being funneled through those channels to basically support Pakistan. Okay. Please also remember one thing is that there, irrespective of how we feel about the Pakistan, both within the United States and in United Kingdom, there are strong lobbies who favor Pakistani state. या मैं एक And मिनट those में strong lobbies who favor, sorry, नहीं नहीं सर, बोलिए. आप जो बोल रहे हो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. बहुत अरसे से पाकिस्तान और यूएसए दे वर मेजर नॉन नेटो एलाइज. वो अलायंस अभी तक बिल्कुल खत्म नहीं हुआ बिकॉज द रूट्स ऑफ दैट अलायंस आर क्वाइट डीप. इन यूएसए देयर आर huge lobbies who still lobby for Pakistan and Pakistan's case. In UK, there is a huge political lobby which runs the whole system of supporting Pakistan. इसमें दो राय नहीं है. जो आप बोल रहे हो कि USA and UK are trying to do something to revive Pakistan. Why they're doing it will come. That's what I'm more interested in. We'll come to that. And this funneling of arms, जितना भी यहाँ से हथियार जा रहे हैं यूक्रेन के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, ये दिस इज ऑल जो यूएसए और यूके कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए. आपने ये बात तो जिक्र कर दिया. दूसरा है कि चाइना का पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है. हमें सबको पता है कि सीपीसी के जरिए इन्होंने $31 बिलियन ऑलरेडी डुबो दिया. जैसे आपने बताया जितना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो सब चाइना के हैं. राइट. और चाइना भी नाखुश है पाकिस्तान के साथ क्योंकि उन्होंने जितना भी कर्ज मिल रहा है उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है. और जैसे आपने बताया ये चाइना वाले नए जूस हैं और वो अपना पैसा लेके रखेंगे या खून चूस के रखेंगे. इन दोनों में से एक चीज है. क्या आप मेरा इसमें दो सवाल है. इनफैक्ट एक सवाल है, दो पहलू हैं. पहला ये सवाल है इन दोनों का क्या इंटरेस्ट है. दूसरा सवाल ये है कि क्या इज पाकिस्तान बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड स्टेट और इसका क्या आगे होगा और इसका इनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा. इसके ऊपर आप जरा गौर कीजिए और बताइए. देखिए, the point number one is this: as far as China is concerned, China is playing a very insidious game in Pakistan. It is quite aware of the fact that they cannot bring about any viable political changes in Pakistan. They are very clear in that. They know that's not going to happen. So right now, but they are also aware of the fact is that something which we do not take cognizance of easily is the fact is that about 75 to 80% of the Pakistani military equipment is now become Chinese. A. B. All major overhauls, all major programs are being, although they are being conducted in like JF-17 program, upgrade program, etc., avionics, etc., the drones, all kinds of systems that are there, they are all dependent on Chinese to provide them with assistance or upgradation. Point one. Number two is large number of Pakistani younger generation officers are going to China for studies, attending courses, attending technical courses. So there is an military envelopment of Pakistan which is taking place. Now you ask me a question: what the UK and the US interests are? So now UK and the US are uncomfortable with these issues. Okay. So what they are trying to do is leverage
the senior military leadership to ensure that the Pakistan does not become a new North Korea in this region. Right. So that means So I mean, what this analogy is not no, very no, good, but I see your point, sir. I mean, for one moment, let me dive, sorry. let me say, Yeah, take yeah. a detour into China. Look, I've always been of the opinion, मेरा राय ये है कि चाइना के पास दो मैवरिक हैं. एक दाहिने साइड उनका पाकिस्तान है और बाएं साइड नॉर्थ कोरिया है. जब भी वो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और इंडिया के साथ कलबली करना है तो वो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, और जापान, रशिया और उस इलाके में और यूएसए को के साथ कुछ चुगली करना है तो नॉर्थ कोरिया को छोड़ देते हैं. ये तो मेरा पुराना, ये मैंने इसके ऊपर लिखा भी है. तो क्या आप सोचते हो कि इज दिस लिंक गोइंग टू इंक्रीज कंसिडरिंग दैट चाइना कि पाकिस्तान में जो गड़बड़ हो रहा है, और यूएसए और यूके किस हद तक इसको काउंटर कर सकते हैं? Okay. The short answer to your question is China will do everything under its power to securitize its investments in Pakistan. When I say securitize its investments in Pakistan, I mean the following. The Karakoram Highway will never be allowed to be tampered with. Number two, Gwadar incrementally is not going to become only a submarine base. The dredging of Gwadar is going to take place, and we might find in next 3 to 4 years, 5 years maximum, Leon class aircraft carriers docking over there. Correct. So it will be a major base. Now it will become a very major base. Now please try and analyze if there is a nuclear submarine or a normal submarine base and an aircraft carrier and a full-fledged technical support system. Which, I mean, base is not something which you just provide land up there. Base is you have to create all the technical facilities. Yeah. So if you have that, at one level, you are closing the Straits of Hormuz. You're taking charge of the entire Persian Gulf. On the other end, you have Djibouti, where the Chinese already have a strong facility. So what you have done, actually speaking, is close the Mediterranean routes, or you have created a domination over the Mediterranean routes. You have created a domination over the energy supply lanes of the world, and you are now hereby forcing Indo-Pacific or countries like India to now deal with this for security of its own energy supplies, etc., etc., etc. I don't want to go in details, but that's the whole. आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्योंकि ये जो नया डील चाइना ने ब्रोकर किया बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, अगर उसको भी आपने जो बोल दिया तो our security situation in the Middle East, West Asia, and also our energy lines are under some problem. ये बात yes, right. तो इसके अगेंस्ट जो है वो आई एम श्योर ये बात तो यूएसए और यूके को भी पता है, राइट? और वो क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर गौर कीजिए. उसके बाद मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे. Okay, United States is conscious of the fact of that continental Asia is becoming a distant dream for them. Therefore, United States is doing 2-3 things. One, it is using the argument within its political establishment about the safety of the nuclear weapons to continue to manipulate both the senior political establishment. As you know, the Nawaz Sharifs and all those guys either live in Dubai or they are in United Kingdom, etc., etc. And the military establishment, most importantly the ISI, etc. Typically, they are the new oligarchs of Pakistan. I mean, they might be in uniform or anything, but they're actually the oligarchs. They are the ones who are controlling this whole issue. Now, these guys are being manipulated by them under the rules of fighting the Islamic State, Taliban,
dealing with Afghanistan to under the aura of dealing with Islamism, riding radicalization. On the other hand, there is Blinken went to Central Asia recently. So they are concerned that the SCO might become an important place. So what they're trying to do is an interesting game is being, from my perspective. The interesting game is India is being allowed to have a good relationship with Russia, as long as the perception is that the Russians are not so close to China and Russian-Chinese interests are not the same in Central Asia. On the other hand, they are trying to move into Uzbekistan and Kazakhstan to try and create a dissent within the region. So once they come back into the region and they want to cut back into the region, so they want to be on the north into the Central Asia, some kind of military presence. You remember they used to have the Maras Air Base, etc. And now they want to come back into keep Pakistan under their thumb. Right. And the man, like I said earlier, they use is the United Kingdom. And if you recollect, on the eve of 15th August of 2021, when Afghanistan, Kabul fell, the man at the center of this thing was the Chief of Defense Staff of United Kingdom, who was there in Afghanistan, and then he was evacuated to Pakistan. Right. So this is the game plan. So this is an extension of the big power competition rivalry now coming into this region. Right. That actually brings me जो आपने बताया है वो जो मेरा व्यू पॉइंट है आपने उसको कंफर्म कर दिया कि ये जो पाकिस्तान बिग पावर का एक नया बैटल ग्राउंड बन गया है. जो चाइना इज डूइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान आर्मी के जरिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और यूएसए जो है पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करके ये दे वांट टू गेट बैक इनटू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने के लिए उनको पैसा चाहिए और पैसा का कंट्रोल यूएसए के साथ है, उनका आईएमएफ के थ्रू, और आईएमएफ के बिना पाकिस्तान का गुजारा नहीं है. तो ये आगे जाके इन दोनों के बीच में ये राइवलरी पाकिस्तान के अंदर चलेगा. बट इसके साथ साथ मेरा ये अनुमान है कि जब तक ये राइवलरी चलेगा पाकिस्तान विल रिमेन पॉलिटिकली एंड मिलिट्री अनस्टेबल, और कंबाइनेड विद जो टीटीपी का हरकत है, बीएलए का हरकत है, राइट, और उनका खुद अंदरूनी रेडिकलाइजेशन जैसे टीएलपी है और वगैरह वगैरह. टीएलपी है तहरीक लबैक पाकिस्तान, क्योंकि उनका भी कुछ राइट. सो जो हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान जो है ना पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज्ड ही रहेगा, और आगे जाके हमें एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान के साथ और कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल पाकिस्तान के साथ व्यवहार करना पड़ेगा. राइट. इस हालत में आपका जो सवाल हमने अब ये हम जरा चौथा मुद्दा पे आएंगे, पाकिस्तान करंट अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया, उनका क्या रवैया होगा हमारे ओर, क्योंकि आखिर जो भी हम आज तक सुन रहे हैं उनका अर्थव्यवस्था डाउन है, सिविल मिलिट्री खलबली में है, हमने देख लिया, एग्जामिन कर लिया चाइना, यूएसए और यूके का रोल क्या होगा, पर हमारे लिए क्या है, आप इसके बारे में जरा बताइए हमें. Okay, so the bottom line is the Pakistani Foreign Office and the Pakistani military establishment are of the belief that Pakistan, because of the factors we just discussed, it remains strategically relevant to be allowed to fail, and that allows the Pakistan space not to give undue concessions to India. So they are living in the belief that they can ride the storm, even if the storm they cannot ride, but giving concessions to India will be counterproductive. Yes, it's a card which we can use, and it can be only used once, and this is not the best time for it. Yeah. Second problem they have, second issue that they have, I'll just quickly finish this. The second issue that they have, take your time, sir. आप आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं आने. So second issue is that
they believe that when they negotiated through back channel the ceasefire of February 2021, they have given India adequate concessions. The understanding in 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 the back channel or the dark web, what if you may, is basically is that the Pakistan agreed to stop cross-border terror, deal with it effectively, doesn't mean fully, accepted the ceasefire, and therefore, and India, on the other hand, had agreed to release some political prisoners, bring about a degree of normalcy in J&K, and also, and I repeat, also go in for elections at an early date. According to some interlocutors that we discussed with and who have been part of these discussions, they believe that date is past. We had said much earlier, but my understanding is no such commitment was given in terms of saying, except for saying is that at appropriate time elections will be held when the conditions are right. That's the word which is being used. Okay. Now this is the state. From here on movement, Pakistani believe this, that we need to initiate a dialogue on making line of actual control at some kind of a de facto border. Okay. They want to have a dialogue. They want to have an initiation. If you recollect, there was also a discussion that took place on demilitarization Yes. of 3 years Siachen back. Glacier and then pull back, etc., etc., etc. So they want to have this kind of a dialogue. Now, they are very clear on this thing is that this is the last bit. And all these things should happen under the so-called 4-point program of Musharraf, which incidentally is a very interesting story of that, is that it is never documented. That 4-point program is no way documented. Mr. Kasuri, in his book, talks about this. Mr. late Sati Lambaji talks about it, but it is never clearly Nothing indicated. Is very there clear was no such discussion. Yeah. There was never such discussion. It was just a drawing room talk, acceptancing of such basic norms of discussion, but it is never it is written down. There's no such written issue. So basically so under the circumstances is that the Pakistanis want that negotiation should start on try to make sure that the line of control is becomes a de facto or from de jure to de facto border, and there is a better cross-border movement, etc. There is a greater interaction between the two sides of the Kashmir, etc. And one more element of this whole issue is, which has not been covered so far, is that there is a discussion to revitalize the SARC project, the SARC dialogue, and the revitalization of the SARC dialogue is that instead of India, because Pakistan is going to be the host and India is not going to go to Pakistan, is to use virtually, to hold the dialogue virtually. Virtually, okay. So these are some of the items which are on the table. So they I mean, when Pakistan जब हमारे से बात करना चाहता है, वो फर्स्ट मतलब एक जगह पे पहुंचे हैं, वो वहां से पीछे नहीं हटना चाहते हैं. वो सिर्फ ये चाहते हैं कि LAC को कन्वर्ट करो बॉर्डर में और सार्क डायलॉग शुरू करो, ये वगैरह 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 वगैरह, राइट. पर हमें भी पता है कि ये कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इतना पॉलिटिकल अस्थिरता है पाकिस्तान के अंदर. हम बात भी करें तो किसके साथ बात करें, राइट. अगर हम कल के दिन कोई समझौता पे आ भी जाएं, तो अगर उसके विपरीत अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम आ गया पाकिस्तान के अंदर, तो वो तो उसका कोई फायदा तो है ही नहीं. तो हमारा दुविधा ये है हम बात करें तो किसके साथ करें.
खैर, बात यह है See, कि एक मिनट सर, बात यह है कि पाकिस्तान में खुद के साथ वो अपने आप के साथ खुद बात नहीं कर सकते हैं, किसके साथ बात करें, अपने आप के बीच में भी यही प्रॉब्लम है, राइट? तो so, इस so, सर प्लीज गो अहेड सर. so what basically I'm trying to say is that from our perspective, this is not the opportune moment to discuss anything with Pakistan at this Right. particular point in time. That's Okay. something which we need to understand. तो हम कुछ बात The भी नहीं second कर issue सकते, is, तो हमारा ऑप्शंस क्या है सर इस हालत में? see, ये our options are at this point in time. No, my last point I want to make is on this line of actual control, making de facto, de jure border, etc., etc. Our position, at least from my perspective, our position, sometimes which people do talk about it. I don't know how far it is true, but basically our position is making any changes to the line of control by India will be the final point in settlement of Kashmir issue. It cannot be a discussion point. It will be the final settlement of the line Kashmir issue, for which we have to travel many miles before we come there. Yeah, So there's no doubt about it. In this regard, India's options are right now is very simple. We have to wait and watch. Okay. We have to start very closely monitoring their nuclear program. My big concern is that there might be breaking into their nuclear establishment, because you are aware that all systems are moved by road, they're moved under this thing. I mean, there's a constant movement taking place, etc., etc. Under those systems, we have to be very, very carefully watching their nuclear program. There has been an article written by my friend Manish Tiwari recently, who's talked about the fact is that during the Balakot incident, the 2-3 days after that, there was an alarm of nuclear change in nuclear status, which put us into a bit of a tizzy, and we raised this issue with the Americans. And this Pompeo has written in his book, and so has Bolton also written a similar thing in a book. My understanding is that we did not panic or did anything. We gave a clear warning to the Pakistanis that if you go that route, we are ready for it. Do not go down that route. It was conveyed to them. And the similar conveyance, what we did to the Pakistanis, was conveyed to the Americans. So there was this confusion which he has created. And let me clarify, because after one of the discussions that we went on, I came back and sent a note on this issue to the people who matter. And there I had clarified the Pakistani position, and I said that it was conveyed to them that Pakistani did call a meeting of Nuclear Command Authority. They did create a degree of upgrade the status of their weapon systems, etc. Now, this is an issue that we need to be very worried about. We worried about purely because भीड़ इकट्ठा होके अगर किसी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में अटैक कर देती है और बम को उठा के, अगर whether it can be used or not used is not an issue. If two weapons are lost, कलबली मचेगा. So that's the issue. Yeah, I agree with you completely. इसमें दो राय नहीं है. Right. So this is my big issue. My second issue इसके बारे में मैं इसके what आपने जो बोला है मैं उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर इशू के बारे में हमारे पास काफी चिंता है और इसके बारे में 2 मिनट में अपना राय देना चाहता हूँ. सबसे पहले हमें सतर्क होना चाहिए. ये न्यूक्लियर इशू के बारे में इसमें कोई 2 राय नहीं है. क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के इलाके से निकलेगा वगैरह और किसी कट्टरपंथी के हाथ में चला जाएगा, यही डर है सबको. बैकपैक बना के वो कहीं और उड़ा देंगे. क्या ये हो सकता है? मेरे ख्याल में इसका संभावना कम है. ये इसका संभावना कम क्यों है कि ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं और वॉरहेड्स का जो और ये मिसाइल्स वगैरह अलग अलग रखा जाता है. इट्स अ नेशनल पॉलिसी और कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता. पर डेंजर क्या है
ये डेंजर ये नहीं है कि इनका वॉरेट्स छीन लिया जाएगा वगैरह वगैरह। डेंजर ये है कि इनका न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल वो चुरा जा सकता है। अगर वो न्यूक्लियर फिसाइल Dirty bomb. मटेरियल, हाँ डर्टी बॉम्ब, अगर किसी न्यूक्लियर मिसाइल किसी के हाथ में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल लग गया, अगर कोई कट्टरपंथी साइंटिस्ट हो या कोई इंजीनियर हो जिसको थोड़ा बहुत पता है कि किस तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल को हैंडल करना है, वो एक डर्टी बॉम्ब या एक क्रूड बॉम्ब लेके, एक सूटकेस बॉम्ब जो बोलते हैं, वो लेके उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये डर सिर्फ हमारे लिए इंडिया में नहीं है, ये जितना भी आप वेस्ट में जाके यूएसए, यूके, जर्मनी और यूरोप में अगर आप बात करोगे, उनको इसके बारे में ज्यादा फिक्र है, राइट। अगर यूएस पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो हमारे ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, बट उसके राइट इस हालत में इसका जो पॉसिबिलिटी जिस तरीके से गलबली मचा हुआ है, इसका थोड़ा बढ़ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट सर। इसके बाद, इसके अलावा हमारा क्या ऑप्शंस है, हाउ टू डील विद पाकिस्तान इन द See, नियर टर्म? one of the big problems that we now face at this particular junction is with political chaos, weak economy. Sometime or the other, the army will have to step in. Army is the final arbitrator of Pakistani state. Now the question is, how does the army step in? किस तरह से आर्मी करेगी? क्या coup होगा? Coup नहीं होगा? Now, if there is a coup, it's a reasonably okay situation. We are unhappy with the coup in Pakistan, but it will be something they will be able to control situation, etc., etc. उसका कैसे control होगी? That's something we don't. I mean, that's something when we speculate, we can talk about it and we can plan about it, etc., etc. But the question is there a large scale of eruption of riots between the army and the people? तो And उस हालत में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में और बढ़ जाएगा और उनका हालत और खराब हो जाएगा। there will be an internal chaos in the country. Correct. And how do you create? And there will be fighting going on, and in between you superimpose TTP, Baluchistan Liberation Army, Islamic State, and some other Right, guys. sir. How do you handle this whole? So this Okay. conundrum can become very, very troublesome for us. Alright. So therefore, I think at this point in time, we have to be very clear. We have to close down our borders, very clearly, sincerely thinking, upgrade our intelligence on Pakistan, try and see what the hell is happening inside the place, and be clear that should the army, we should be able to have some kind of conversation with the new army leadership. I'm sure we have had, if we don't have, we need to have, is that the consequences of their actions will be, there'll be a retaliatory thing, something which the threat assessment of the United States, which recently come out, they have categorically said, please don't think that you can get away by doing anything to India. Under Modi government, you will have a degree of a more robust retaliation than you have ever thought of. Thank you. राइट सर, आई थिंक आपने जो बोला है बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है कि हमारा एक मेजर ऑप्शन है, इनफैक्ट वी हैव ओनली एक ही ऑप्शन है कि वेट एंड वॉच, मॉनिटर द सिचुएशन एंड एक्ट टू द सिचुएशन एंड डू नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन। उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनका न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर किस तरीके से हम मॉनिटर कर सकते हैं, और ये मॉनिटरिंग जो है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के जरिए और कुछ हद तक मिडिल ईस्ट के जरिए भी हम मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरी चीज हमें मॉनिटर करने की जरूरत है कि ये चाइना और पाकिस्तान के किस तरीके से इनका मेल मिलाप चलेगा या नहीं चलेगा, इस हालत में ये भी देखने की बात है। Right, sir. I sincerely thank you for all the questions and for all your beautiful views. There are a lot of questions. We'll take a little time. We'll even अगर हम थोड़ा देर overshoot भी हो जाए तो हम we'll take all the questions and at least the relevant questions. And right. At the outset, I'd like to thank Abhay for his super sticker. So nice of you. We'll use it well in CASA. Right.
This is General Gautam Murthy, who's the founder of CASA. Does anyone in Pakistan today, Pakistan Army including, have the political heft to revive the so-called four-point agenda in their discussions with India? The crux lies in the question asked by General Shankar, किसके साथ बात करें? मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जनरल गौतम मूर्ति ऐसे शख्स हैं जो एनडीसी में थे, नेशनल डिफेंस कॉलेज में, और ये बहुत बार डेलीगेशंस में पाकिस्तान में गए हुए हैं और ही इज डन had interaction with them. तो एक बहुत जानकार पाकिस्तान के बारे में दूसरे जानकार से पूछ रहे हैं, सर आप बताइए, क्योंकि मैं तो कभी पाकिस्तान नहीं गया हूँ, मैं इतना जानकार नहीं हूँ। मैं उन आदमियों से हूँ जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जानता है। आप बताइए। You see, dialogue on 4-point is a non-starter. The Pakistanis know it. Therefore, the dialogue becomes important. It's a non-starter dialogue which is important, and you continue to raise it as a political issue or as a point of discussion, knowing fully well it has no traction. So it is just a talk shop. It's nothing is going to happen on 4-point. Like I said, till such time we see there is a development in Pakistan which is endearing over a period of time. There is at 2023, I don't think is a period of any kind of a dialogue, because and 2024 is our elections. 2025 is the earliest we can think of doing to Pakistan. Right. तो ये आपने बहुत अहम बात बोला है कि 2025 तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इलेक्शंस तो है ही, उसके साथ उनका chaos भी सॉर्ट आउट होना है, उसका टाइम लगेगा, राइट? सो वी नीड पेशेंस। इसका मतलब हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जरूरत है, राइट? I would like to thank Vambred. He says, love your discussion, sir. With all the chaos, do you think Western nation, Israel and India will defang their nuclear arms? हमने बता दिया, defanging of nuclear arms बहुत मुश्किल चीज है, right? At best, जो मैं सोचता हूँ, correct me if I'm wrong, sir, कि the Western powers, along with IMF, through the financial thing, there might be some more monitoring of their nuclear systems, but that too बहुत मुश्किल मेरे को नजर आ रहा है. I don't think it is feasible. China will not allow it. हमें पता होना चाहिए कि चाइना भी एक एक्टर है, और चाइना का वीटो पावर है यूएन में, और IAEA में भी उनका काफी बोलबाला है, तो इनके ऊपर थोड़ा आना मुश्किल है. At best, I expect might have some more closer monitoring, right? And that too unofficially. I don't think officially हम कुछ कर सकते हैं, right? Okay. A question: how should we make our lobby in USA and UK as effective as theirs? How should we make our diaspora useful for us, like Jews? There is no benefit by boasting our COs, which is of no use for Indic interest. Your view, sir? Okay. We have a reasonably strong lobby with US and UK. I mean, India needs to pay a little more attention to UK. We don't pay attention to them because we think they do not have much of a heft other than being a vassals of the United States. But as far as the United States is concerned, you see, you have to understand that CIA, the intelligence community, the deep state of United States have had a long association with Pakistan. There is a degree of they are pro Pakistani state in some way, and they believe that the narrative of Pakistan is being misplayed by a country like India. So they if you see people from United States Institute of Peace and other Stimson, etc., their writings, you will say they are very pro Pakistani writing, and that sure goes also within the establishment. United States is looking at Pakistan as a state where they will like to ensure a certain degree of depth of penetration in their intelligence setup for the discussion that we had on nuclear issues. But it is also important for them is not to give a free pass to India.
The United States, at one level, seeks India as a strong strategic partner in Indo-Pacific in dealing with China, etc., etc., etc. But the United States, unlike us, looks at India in 2035. In 2035, India is a 12 to 15 trillion dollar economy. When And we you're are a a 12 power. to 15 trillion dollar economy, you are a big player. And the way we are doing things right now, I hope we continue, we would be a very strong power. So now, how do we handle this strong power? So at that time, for a unipolar power, that's why I just written a piece on this unipolarity of the United States and its global impact. Is United States is a unipolar power, along with this Western cahoots, would not like to see India being a total big player in so you not only will see the United States playing footsie with the Pakistan, you They'll will play also footsie with us find also. at some, or China, the G2 concept, which if you remember going back Yeah, to Mr. Obama, the whole issue was G2 was to create a sphere of influence in Asia based on Chinese interests and the American interests. We were never there because we were at that time at Hindu rate of growth. Now we are doing well. They understand that if you tomorrow test 10,000 kilometer long Agni 7 or Agni 8, you see the drama that takes place. I'm in a technical dialogue with the Americans and the Australians. I understand what they're talking about. So please, this is a big game which is played, so and nobody gives may free I add, pass to sir? anybody. मैं ऐड मैम कुछ और आपने जो बोला है उसको मैं कुछ और इजाफा करना चाहता हूँ। जो ये बात चल पड़ी है कि क्या हमारा रोल, व्हाई कांट वी मेक, हाउ मच, व्हेन विल वी हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस पाकिस्तान हैज इन यूएसए डिस्पाइट ऑल और सीईओज एंड ऑल इज देयर। ये एक चेंजिंग सिचुएशन है, राइट? पाकिस्तान और यूएसए का नॉन नेटो अलायंस हैज बीन बिल्ट ओवर 75 साल से ये बिल्ड हुआ है। उस 75 साल में पहले 50 साल में इंडिया और यूएसए वेर ऑन ऑपोजिट साइड्स। हमारा स्ट्रेटेजिक Yes, रिलेशनशिप का शुरुआत हुआ है 2000 से, जब स्ट्रोप टैलबर्ट और अपना जसवंत सिंह साहब का, just one thing. हाँ, जसवंत सिंह हमारा जो उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, इनका मेल मिलाप से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुआ है। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरा डेवलप नहीं है। तो जब तक पर वो जो उनका पाकिस्तान और यूएसए का अलायंस धीरे से घट रहा है, हमारा बढ़ रहा है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट? दूसरी बात यह है कि हमारा रिलेशनशिप विद रशिया भी है, इट्स अ ग्रेट पावर। अगर हम कल के दिन एक और उभर के पावर बनेंगे, और ये उसमें डाउट नहीं है, बनेंगे हम, तो वी आर थ्रेटनिंग बोथ चाइना एंड यूएसए डायरेक्टली, राइट? तो इसका भी एक असर होगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का फॉलोअर्ड बहुत बड़ा है, और हमें अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे डेवलप करेंगे, राइट? तो ये एक बहुत गहरा क्वेश्चन है जो ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने सही तरीके से बताया। मैंने इसका थोड़ा अलग पहलू बताया है, बट बात ये है, बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन है, ये मैं इसके बारे में अलग प्रोग्राम बनाऊंगा। इंडिया को राइज कोई रोक नहीं सकता, मैं ये निश्चित बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने 4-5 आई हैव रिटन ऑन दिस, एंड इसके बारे में एक प्रोग्राम भी बनाऊंगा कि क्यों, व्हाई वी नो वन कैन स्टॉप इंडियाज राइज। एज इंडिया राइजेस, हमें हैंडल करना पड़ेगा ये पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो जाने वाला है ही नहीं। ये 220 मिलियन लोग कहाँ जाएंगे? भिखारी लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, और इनके इकोनॉमी रिवाइव होने वाला नहीं है, राइट? इस हालात में हमारा कोशिश ये होना चाहिए, व्हेन डू वी बिकम अ बिग प्लेयर, राइट? दैट इज द मेन थिंग, एंड राइट, okay, one nice question is, two thoughts arise. One is, never interrupt your enemy when it is making a mistake. Two, do your moves when your enemy is most vulnerable on all fronts. Even Pakistan army is divided in two factions. Point तो है सर, इसके बारे में अगर आपका कोई थॉट्स हैं तो।
आई कांट हियर, हम सुन नहीं पा रहे हैं, मेरे ख्याल में आपका म्यूट हो गया है, देखिए म्यूट है आपका। हाँ, बात कीजिए। Okay. No, so I agree with him. I totally. I mean, when they are on a course of self destruction, why should we should Stop just them, watch the fun. watch And them. number two is, uh, as they get divided into various things, they only weaken themselves. And as they weaken themselves, look at this way, is that they will be less of a threat to us. So bottom line basically for us is, at this point in time, as we had been discussing earlier part of this discussion, is that watch, do nothing, keep your powder dry. Right. So there's another nice question by butter chicken and naan. नाम अच्छा है इसका, ये बार बार पूछता रहता है हमें. Sir, could you highlight the water resource crisis in Pakistan from the Indus water system and Kabul River? What went wrong in Pakistan's agriculture? Wherein there a grain export? मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ सर, बिकॉज इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है. हाँ, आप ज्यादा जानते हैं. राइट, ये जो पाकिस्तान है ना, ये इट्स अ सिंगल रिवर सिस्टम. इसका एक ही वाटर सोर्स है, इंडस रिवर. इसके ऊपर उन्होंने पहले एक मांगला और तारबेला डैम है, 2 डैम इन्होंने बनाया है. राइट, बट इनका जो पर पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कोई रिफॉर्म्स नहीं किया, ना लैंड रिफॉर्म्स किया, ना वाटर रिफॉर्म्स किया. सिर्फ पानी इस्तेमाल करते गए, सब कुछ करते गए. ये जो पंजाब है, इट वाज द बेटर हाफ ऑफ पंजाब विच वेंट टू पाकिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं था, सिंचाई नहीं था, पर इनका सब कुछ था. बट दे ओवर यूज्ड इट. इनका पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हुआ. इनके जो एलाइट्स हैं, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया. इनके ज्यादा वाटर सकिंग क्रॉप्स जारी रखे, शुगर केन, राइस वगैरह, जिसके में पानी की जरूरत ज्यादा है. ये जागीरदारी सिस्टम में इन्होंने चलाया और इसमें से पैसा लेते रहे. सो दे डिडंट रिफॉर्म देयर एग्रीकल्चर, दे डिडंट रिफॉर्म देयर वाटर. और साथ साथ इनके जो 2 डैम बने थे, उसमें क्या है कि इन्होंने उनको रिपेयर नहीं किया, उनको मेंटेन नहीं किया. उसमें ये सिल्टिंग हो गया है, कि इनका सिल्टिंग इतना हो गया है कि आजकल उसमें से रन ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर इज ऑलमोस्ट जीरो. तो तो पाकिस्तान में पानी का किल्लत ये जारी रहेगा. और मैंने पिछले ही एपिसोड में बताया था कि इनफैक्ट मैं दोबारा इनका पानी का किल्लत के बारे में अलग मैं आपको सबको समझाऊंगा एक दिन, किसी दिन. पर 2025 ज्यादा दूर नहीं है, अगले 2-3 साल में पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ वाटर स्केर्स स्टेट, कंप्लीट एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी. जिस दिन ये एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी में चला जाएगा, इनका एग्रीकल्चर जो है ना, इनका पाकिस्तान में 20% इनका जीडीपी एग्रीकल्चर है, वो टफ हो जा रहा है. वो ऐसे भी हो रहा है. इसीलिए 3 साल पहले तक दे वर एन एक्सपोर्ट कंट्री, दे वर एक्सपोर्टिंग देयर ग्रेन्स. पिछले 3 साल से वो अनाज इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बदली नहीं होगा. ये मतलब ये रिवर्स नहीं होगा. राइट. इसके अगर ऑपोजिट देखिए तो इनका आबादी बढ़ता जा रहा है. इनका अब बढ़ता हुआ आबादी, कम होता हुआ एग्रीकल्चर, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इनका उत्पादन, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. इनका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्कुल जीरो है. राइट. इनके ये सिर्फ ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये एक्सपोर्ट करते हैं. कोई हेवी मशीनरी नहीं है, आईटी नहीं है, कुछ नहीं, कास्ट कुछ नहीं है. तो इकोनॉमिकल रिवाइवल विद इन पाकिस्तान होने से रहा. आप कितना भी पैसा इसके अंदर डालो, ये होने का अगर होगा तो इट हैज टू बी थ्रू सस्टेन पॉलिटिकल रिफॉर्म लीडिंग टू इकोनॉमिक एंड यू नो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म. ये होने से रहा. सो we will there's going to be a problem of this kind, and this will continue. Your view, sir? No, I just want to add just one small point. You see, we have to understand one thing. अभी पाकिस्तान कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के स्टेप लेता है आज की तारीख में, दैट इज ऑन 17th of March, वो लेता है, अगले 5 साल तक उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. It will take, it's a gestation period is of 4 to 5 years. Now, how does a nation of this 280 million or 220 million survive for those 4 to 5 years and not become a basket case? Yeah, right. That's a very That's a very serious important question. issue. Right.
Sir, please make a video on CI and CFR role in Indo-Pak. Okay, we'll try and do that. Okay. I have tackled right. No, we'll not take this, sir. We'll pass this. Right. So I think we have generally carried out most. So we have what General Gautam Murthy sums it up. He says, "Thank you, sir. Let them wait till 2025. Hopefully, the situation will better by then." देखिए, मेरा अनुमान यह है कि जब तक ये सब हो जाएगा, ये दे विल बिकम अ वाटर स्केयर स्टेट और उसका पॉलिटिकल प्रॉब्लम जारी रहेगा. मेरा अनुमान यह है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इररिलेवेंस ऑफ पाकिस्तान इज सेटन बिकॉज एक जो जनरल ब्रिगेडियर सहगल साहब ने बताया वो एक बात है, पर मेरा थियरी थोड़ा अलग है इसमें. मेरा ये है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड आउट. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो गया इंडो पैसिफिक में. द सेंटर ऑफ रिसोर्स ग्रेविटी और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिसोर्सेस हैज शिफ्टेड आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. आज के दिन ये जितने काड़ी के देश हैं वो अपना तेल को बचाने के चक्कर में और तेल के पैसे के बचाने के चक्कर में दे आर डाइवर्सिफाइंग. और ये जो सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है शिफ्टेड बैक टू यूरोप. अगर आप पिछले दशक या इनफैक्ट 18th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो एशिया का कोई बोलबाला नहीं था, किसी ने पूछा भी नहीं था, क्योंकि उन दिनों में द यूरोप वाज इन टर्मोइल. राइट, यू हैव गॉन बैक टू दैट स्टेज ऑफ यूरोप इन टर्मोइल एंड ताइवान एंड इंडो पैसिफिक इज अ ह्यूज एरिया. इधर का बोलबाला कम हो गया, इधर का बोलबाला कम हो गया. चाहे यूएसए और चाइना पाकिस्तान के ऊपर लड़े या ना लड़े, इस इलाके के ऊपर लड़े या ना लड़े, ओवरऑल फोकस इन दिस एरिया हैज रिड्यूस्ड. इफ यू सी दिस वाटर स्केर्सिटी, ये सब अगर हम सब मिला देंगे तो वी हैव अ लॉट टू थिंक ऑफ. We have a lot to think of how to handle this emergent situation. That to me is a more critical point. It is not whether what Brigadier Arun Sahgal has said is going to come correct or not, or what I have said is going to come correct or not. We might both be wrong, we might both be correct. इससे कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता. इसमें ये नहीं फर्क पड़ेगा कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं. फर्क ये पड़ेगा कि क्या इंडिया सही इस नफ्स को पकड़ रहा है, नफ्स को पाकिस्तान के, और इसके साथ कैसे डील कर रहे हैं. ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. So your last point before I conclude. Look, I have a different view on Indo-Pacific, and because I deal with the issue of strategic realignments, global strategic realignment. That's my area of interest. But I let it pass. I agree with you. I mean, I don't want to get into a debate, but I would suggest that let's do a similar discussion on this, rather the emerging geopolitics of Indo-Pacific, and we can do that. We'll talk. That's what we're going to do it on Monday. I'd like to thank Wamred again. Do you see Pak army influence reduce over time over the civilian government in the near future and behave like a regular army and not a business army? Well, no, I don't think that will happen. Right? I don't think that will happen for the rest of the time Pakistan is. पाकिस्तान का एक चित्रकार ने ये लिखा है, नाजुक मोड. इट केम आउट ऑन फ्राइडे टाइम्स अबाउट 2 weeks बैक. ये नाजुक मोड में ही इनका बस खड़ा है, ना आगे गया ना पीछे गया है और ना खड्डे में गया है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज गॉट स्टक इन दिस प्लेस, नाजुक मोड. हाँ. लेकिन ये इमरान खान ने कुछ दिन पहले बताया, अगर आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डालते हो तो वो ज़ीब्रा नहीं बनता, वो गधा ही रहता है. और मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, पाकिस्तान गधा ही गधा रहेगा मेरे हिसाब से. ओके. और लास्ट में एक चीज ये मैं बताना चाहता हूँ. आई रेड दिस इन डॉन, सो आई थॉट हम आपको बताएंगे. जो मर गया वो शहीद, जो जीत गया वो गाजी, जो सरेंडर कर गया वो नाजी. राइट. वो देखते हैं कि कौन न्याजी, कौन जीतेगा, कौन न्याजी बनेगा और क्या कौन गाजी बनेगा. राइट. एंड सर, थैंक्स अ लॉट for coming on the show. I enjoyed myself. I hope you had a absolutely right. और मैं चाहता हूँ कि I hope जितने भी ये शो को सुने हैं, they're happy with this. और मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ
अगला जो शो है हम करेंगे इंडो पैसिफिक के ऊपर, राइट। और इंडिया का क्या रोल होगा और नया आर्किटेक्चर क्या होगा इंडो पैसिफिक के ऊपर, जब वो हो जाएगा और ये हो जाएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, जिसके बारे में हमने आज जिक्र भी नहीं किया, राइट। अगर ये तीन चार सब्जेक्ट्स हम टैकल कर लेंगे, हमें बड़ा दृश्य मिलेगा इंडिया का क्या रोल होगा इस इलाके में, इंडिया का क्या रोल होगा रीजन में, और इंडिया का ग्लोबल क्या रोल क्या होगा। उस वक्त हम आके दोबारा हम बात करेंगे। उस वक्त एक पैनल ले आऊंगा मैं 3-4 विशेषज्ञों के साथ, जिनके राय अलग अलग हैं इसके बारे में, ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो, राइट। दिस इज माय एम, लेट अस सी वेयर इट गोस, right? Last but not the least, thank you all, and we hope that we are on top of the situation. At this point of time, I see our government on top of the situation, right? I have that confidence, and we should all have that confidence. We are doing the right thing. Thank you, and Jai Hind for a great discussion. Good evening. Thank you very much, sir.